Hi everyone and welcome back to my YouTube channel Simply Commerce. So let's begin with the theory base of accounting part 2. We have already completed 3 concepts. So let's begin with the fourth concept, which is the historical cost concept. Okay, according to this concept, any asset is recorded in the books of accounts at the acquisition price, at the price paid to acquire it. At what price? At the price paid to acquire it, or in other words, it is called the cost at the time of purchase. The cost at the time of purchase. ठीक है. अब ये जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है किसी भी असेट की, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द परचेज प्राइस, दैट इज द प्राइस दैट यू पे टू द सेलर फॉर द असेट, प्लस इसमें आप और भी कुछ चीजें ऐड करते हो. व्हाट आर दोस थिंग्स? ऑल द एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग द असेट टू द प्लेस ऑफ यूज एंड टू मेक इट रेडी फॉर यूज. समझ में आया क्या है? कोई भी असेट का एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है? उसका परचेज प्राइस, जो भी उसको खरीदने का एक्चुअल प्राइस है वो, और जितने भी एक्सपेंसेस. अब आपने असेट खरीदा, असेट को आप खरीद के कहां लेके जाओगे? मशीनरी है जैसे, where will you take it? You will take it to the factory, you will install it, then only it will be ready for use. So जितने भी expenses हो रहे हैं उसके खरीदने से लेके उसके इंस्टॉलेशन तक, मतलब उसको रेडी फॉर यूज करने तक, उस असेट को, उसके बीच में जितने भी खर्चे हैं वो सब आप उसके परचेज प्राइस में ऐड करोगे. then only you will get your acquisition cost. Understood? And at this price you are going to record in the asset in the books of account. For example, you brought a grinding machine. आपने जो बिजनेस है उसने एक ग्राइंडिंग मशीन खरीदी for rupees 4 lakh. This 4 lakh is the purchase price. ठीक है. अब इसमें आप क्या क्या चीजें ऐड करेंगे? पेड द ट्रक टू ब्रिंग द मशीनरी टू द फैक्ट्री. अब ये जो ग्राइंडिंग मशीन है उसको फैक्ट्री तक लाना पड़ेगा ना, तो वो ट्रक में आई, वो मशीन को आपने ट्रक में लोड करा, तो ट्रक वाले को कितना पे किया? 4000. ठीक है. फिर आपने वर्कर को पे किया अनलोडिंग के लिए 1000. ठीक है. फिर आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने पे किए? 10000. ठीक है. तो ये जो बीच के एक्सपेंसेस हैं, these expenses are expenses to make the asset ready for use. ready for use. ठीक है. ready for use के लिए जब तक वो asset ready for use नहीं होता उतने तक लाने तक, उस पॉइंट तक उस असेट को लाने तक, मतलब जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो उसको आप परचेज प्राइस के साथ ऐड कर दोगे. एंड दिस ब्रिंग्स योर टोटल कॉस्ट ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन एज 4,15,000. This is called the total cost or the acquisition cost, and this is the cost which you will show in your books of account. Understood? You will not show 4 lakh. 4 lakh ही नहीं करना है आपको books of accounts में record. You are going to add all the expenses which will make the asset ready for use, which includes transportation costs, installation charges, किसी भी वर्कर को उस बीच अगर वो asset पे वर्क कर रहा है, लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है, उसको अगर आपने कुछ पे करा है, वो सब कुछ आपको ऐड करना है इस परचेज प्राइस पे. Understood? So the first point in historical cost is that the assets are always recorded in the books of accounts at their total cost or the acquisition cost. Okay. Now the second point. So this is your star point. This is the star point. Remember this. Add all the expenses till the asset is brought to the place of use and installed to make the asset in usable form, which is total cost or acquisition cost. Okay. So up the assets are always recorded at historical cost, that is your total cost acquisition cost. But अब वो asset को आप क्या कर रहे हो? आप for selling purpose तो लाए नहीं हो. The assets are always brought in by the business for long term benefit, है ना? You are going to use the asset for a long time, but due to the usage, due to the wear and tear, due to the obsolescence of the machinery asset, it undergoes depreciation. वो जो asset है, it will keep depreciating, its value will keep going down year after year. So we subtract the depreciation from the cost. ठीक है. वो सेम नहीं रहेगा. आपने 5 लाख पे उसको खरीदा है तो हर साल जितना जितना आप यूज कर रहे हो, जितना भी डेप्रिसिएशन है, जैसे 10,000 है, अज्यूम करो आप 10,000 वर्थ का एक साल में यूज कर रहे हो उस असेट को, तो 10,000 हर साल आप उससे सब्ट्रैक्ट करोगे.
और उसकी बुक वैल्यू विल कीप चेंजिंग, इट विल कीप चेंजिंग. सो इन द फाइनल अकाउंट्स जो भी असेट्स होते हैं ना, इट इज ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट. सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है. एंड इन द बैलेंस शीट इट इज रिकॉर्डेड एट book value, it is recorded at book value. And what is this book value? It is cost minus depreciation, it is cost minus depreciation. तो हर साल book value will keep changing, वो कम होती जाएगी, ठीक है. And you are not going to record the asset at market value, ठीक है. assets will never be shown at market value, not recorded at market value. market value मतलब जो उनका करंट रेट है, ठीक है, प्राइस है. अगर आप उसको सेल करोगे एसेट को, तो जो उसकी मार्केट में वैल्यू है वो होता है मार्केट वैल्यू. सो एसेट्स विल बी ऑलवेज रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू एंड नॉट मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू कीप्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना. कोई भी चीज की मार्केट वैल्यू इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब एक चीज स्वेटर हमें शायद हिल स्टेशंस में सस्ती मिले, पर प्लेन एरिया में हमें महंगी मिले. So its market value will vary. It varies from place to place and it also varies from person to person. अब आप अगर किसी को जानते हो तो वो आपको शायद सस्ते में दे दे, है ना, और maybe the person might sell it at a high cost, ठीक है. तो market value increases or decreases from place to place and from person to person, ठीक है. तो सेकंड पॉइंट क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट का, कि assets are recorded in the balance sheet at book value and not market value, ठीक है. अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्यों कहलाता है? बिकॉज द असेट्स आर रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस, ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट, एंड इट रिलेट्स टू द पास्ट, इट रिलेट्स टू द पास्ट. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदी है 2.5 करोड़ की, कितने की? 2.5 करोड़ की. कब खरीदी है? 2020 में, ठीक है. तो आप इमीडिएटली बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड कर दोगे यही वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू रिकॉर्ड कर दोगे. And this value will continue to show in the books of accounts for many years, जब तक वो asset है. पर actually उसकी market value में change हो सकता है, उसकी market value अभी 5 करोड़ हो, but in the books of accounts it is always showed at the acquisition cost. 2.5 करोड़ ही दिखाता रहेगा जब तक कि आप उसको sell ना कर दो. Understood? So purchase, the asset will be shown at the cost relating to the past. That is why it is called historical cost method. अब ये जो historical cost method है, it leads to objectivity. What do you mean by objectivity? Objectivity का मतलब है कि जो प्राइस आपने पे किया है उस असेट को खरीदने के लिए, that price can be verified. It can be verified by purchase documents. आप उसके बिल्स एंड उसके परचेज इनवॉइसेस के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो कि क्या हाँ यही प्राइस था जिसमें हमने वो असेट खरीदा था. सो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लीड्स टू ऑब्जेक्टिविटी. ओके, इट इज ऑब्जेक्टिव बिकॉज द कॉस्ट कैन बी वेरीफाइड. देन द सेकंड पॉइंट, द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लीड्स टू रिलायबिलिटी. अब रिलायबिलिटी कैसे होगा? बिकॉज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द asset is always recorded at book value, है ना, and it's not recorded at market value. Why? Because market value of the asset keeps changing. मैंने अभी बताया था ना आपको पिछले एग्जांपल में, market value keeps changing from place to place and person to person. So अगर आप books of accounts को maintain करोगे at market value, you will continuously have to keep changing it, है ना, because it keeps changing. So it will be a complete mess. Your accounts will be a complete mess. So it's better to record it at historical cost concept, based on historical cost concept. So therefore it leads to reliability. If books of accounts are maintained on historical cost concept, it leads to reliability. ठीक है, they are reliable, they don't keep changing every time, because आपने किस पे record करा है? At the cost of acquisition वाला, which remains the same, है ना. आपने जितने पे खरीदा है उतने पे ही आपने उसको रिकॉर्ड करा है. Now this historical cost concept is based on the assumption of going concern concept. Going concern concept का मतलब होता है कि हम assume करेंगे कि business will continue for a long time. It will not wind up immediately. That is why when assets are bought, they are shown at cost. They are shown at cost because you have assumed that the business will continue. So you will use asset for a long time and you are not going to sell it. You are not going to sell it. So
the historical cost concept is based on the assumption of going concern concept. तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि historical cost concept कौन से assumption पे based है, it is based on the assumption that business will continue forever. That is the historical cost, that is the going concern concept. Okay. Now the next point is, which is very very important, is that the historical cost concept का एक limitation है, that it does not show the true profits of business. It does not show the true profits of business. They are hidden profits in a business if the business records assets on historical cost concept. क्यों और कैसे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ. अगर आपने एक बिल्डिंग, आपने मींस बिजनेस ने एक बिल्डिंग परचेज करी है 2020 में, कितने पे, 5 लाख पे, तो इमीडिएटली आप बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड कर दोगे 5 लाख, है ना, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. नाउ इन 2026 the value of the building is 50 lakh. The book market value has increased. The market value has increased. But in the books of account, it is still showing 5 lakh only. So the business has hidden profits. So the business has hidden profits and it does not show the true profit or worth of the business. जबकि उस building की worth कितनी है? At present it is 50 lakh. But books of accounts क्या show कर रही है? 5 lakh only. Understood? So if the assets are recorded at historical cost concept, then it does not show the true profit or worth of the business and there are hidden profits of the business. This is the limitation. This is a limitation of historical cost concept. Okay, so please note this down. All the points are very important. The fifth concept is your dual aspect concept. Now every business transaction matlab monetary, it should be monetary, then only it will be recorded. So every business transaction has dual effect. Dual matlab two sided effect. So every business transaction has a debit and a credit, okay, and are recorded in two accounts. So every business transaction has a dual effect of debit and credit and they are recorded in two accounts. If something changes on one side of the business, an equal change must happen on the other side. An equal change must happen on the other side. So the debit and the credit amount should always be same. Should always be same. ठीक है? Now I'll explain this through an example. Now the business purchased furniture for rupees 5 lakh. ठीक है? तो furniture is an asset. तो asset अंदर आ रहा है business में. Asset is increasing. And the cash, business is paying cash also. So cash is also an asset. है ना? So cash is an asset. So on one side your asset is increasing and on the other side your asset is decreasing also. ठीक है? So two separate accounts will be affected. One is your furniture account and the other is your cash account. So the journal entry will be furniture account debit to cash account. To cash account. Furniture account debited and this account is debited and cash account is credited. So what will be the amount? It will be 5 lakh and the same amount will be credited. So for every credit there is an equal debit. For every debit there is an equal credit. And your accounting equation, the next point is that your accounting equation is based on this concept. And what is accounting equation? This is the next chapter. Not the next, I think after this one more chapter is there and then after that we are going to do the accounting equation. So accounting equation is your assets is equal to liability plus capital. Asset is equal to, assets means you know all the assets, plant and machinery, building, land, furniture, fixtures, which all provide long-term benefits. And what is liability? All the external liabilities. And what is capital? All the internal liability, owner wala. ठीक है? So your asset should always be equal to liability plus capital. So this side, the left hand side is always equal to your right hand side. Dual aspect concept, है ना? So the very important point in this is for every debit there is an equal credit. For every debit there is an equal credit. Now the sixth important, very important concept is your revenue recognition concept. Recognition का मतलब होता है books of accounts में record कब होगा. Recognition means recording in books of accounts. In books of accounts. ठीक है? Now revenue होता क्या है? It's amount earned by the business from its core activity, that is by selling goods, ठीक है, and by providing services.
ठीक है. रेवेन्यू कैन ऑल्सो बी अर्न फ्रॉम, ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया. एंड देन रेवेन्यू कैन ऑल्सो बी अर्नड फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो. जैसे कि बिजनेस ने कहीं किसी और कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो उसको डिविडेंड मिल रहा है. बिजनेस ने अपना लैंड रेंट पे दिया तो उसको जो रेंट मिल रहा है. सो दिस इज नॉट द कोर एक्टिविटी बट यू आर अर्निंग दैट रेवेन्यू. ठीक है. नाउ one very important thing, revenue is recorded, the next important point is revenue is recorded when it is earned. This is a very important term. revenue कब record होती है? When it is earned. earned का मतलब ये नहीं है कि मिल जाना, it's not मिल जाना. ठीक है. earned का मतलब अभी I'm going to tell you. First let me just explain this. Revenue is recorded when it is earned and not when cash is received, and not when cash is received. earned का मतलब होता है at the time, earned का मतलब होता है at the time goods are delivered. जैसे ही goods business deliver कर देता है purchaser को, at that point of time revenue is recorded or earned. जैसे ही बिजनेस कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर देता है उसी पॉइंट पे रेवेन्यू इज अर्नड. ओके. सो जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है, वर्क इज डन, you can say that the revenue is earned. The revenue is earned. ठीक है. अब जैसे कि मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं गुड्स देती हूँ ए को at rupees 5 lakh on credit, at rupees 5 lakh on credit. ठीक है. तो जैसे ही गुड्स उसके पास पहुंचते हैं, at that moment I can say that the revenue is earned. जरूरी नहीं है कि उसने 5 लाख रुपए मुझे पे कर दिए. ठीक है. I've given him on credit, तो वो बाद में पे करेगा वो 5 लाख. तो ये नहीं है कि मैं वो 5 लाख रिकॉर्ड बाद में करूंगी. I am going to record it the moment my goods reach him, the moment my goods are delivered to him. That is the point of time when I can say that the revenue is earned or recorded. And other example, अब जैसे मेरा बिजनेस है कि I provide AC की सर्विसिंग. I do. My business is doing AC services. My people from my business, from my company, they go and do AC servicing in some house of my customer. The moment the service is provided, उनके सारे AC की सर्विसिंग हो गई, जैसे ही उनकी सर्विसिंग हो गई, the work is done, I can say that the revenue is earned. मुझे अगर उनसे कितने रुपए लेने थे, जैसे कि टोटल था 5000 का, मुझे उनकी एसी की सर्विसिंग का कॉस्ट है. ठीक है. तो जैसे ही सर्विसिंग हो गई, जैसे ही मेरे लोगों ने काम कर दिया वहां पे, that moment I can say that the revenue is earned. Not when they will pay me 5000. हो सकता है immediately they'll pay, और हो सकता है वो बाद में भी पे कर सकते हैं. But I'm not going to record that 5000 later when they will pay. I'll pay it at that point of time when my work is done or when I have provided my service to the customer. So this is a very important, very important point, that revenue is recorded when it is earned. और earned का मतलब होता है when goods are actually delivered to the purchaser or services are provided to the customer, and not when cash is received. कैश हो सकता है हमें उसी वक्त में मिल जाए, कैश नहीं भी मिलता, then also we are going to record it. ठीक है. It does not matter whether payment is made or it is due. It does not matter whether payment is made or due. हमें क्या मैटर करता है? That our work is done. The moment the work is done, the revenue will be recorded because the revenue is earned. Now I will give you an example. Just listen to me very carefully. A firm sells goods to A on credit for rupees 5000 in May. कौन से month में? May में. And A will pay in July. A is going to pay this 5000 in July. तो हमारा revenue कब record होगा? Our revenue of rupees 5000 will be recorded in May only. हम May में ही record कर देंगे. The moment ये जो goods हैं वो A को पहुंचे, they are delivered to A. At that moment only we are going to record the 5000 as our revenue in our books of accounts, because the goods are delivered to A, and not in July. We are not going to record in July. It will not be recorded in July. Why? Because काम तो हमारा मई में ही खत्म हो गया ना. And revenue is recognized when it is earned. Earned का मतलब है जब काम खत्म हो जाए. So July, जबकि कैश हमें कब मिल रहा है? जुलाई में मिल रहा है. So we are not going to record in July when cash is received from A. We are going to record in May when the goods are delivered to A.
because this is when the revenue is earned. This is when the work is completed. Okay. Now, okay, one more example. A firm received advance, ठीक है? फर्म को एडवांस मिला है कितना? 50,000 on February 2022, ठीक है? For sales to be made in May 2022. एडवांस मिल गया है, फर्म को एडवांस इनकम मिल गई है 50,000, कब मिली है? February 2022 में, और सेल्स कब होगी? May 2022 में. So tell me, when will the revenue be recorded? क्या रेवेन्यू फरवरी में रिकॉर्ड करेंगे या फिर मई में रिकॉर्ड करेंगे? Tell me, when is the revenue earned? The revenue is earned in May. When is it earned? In May. This is because May is the time period when the sale is actually happening, when you are actually delivering the goods, है ना? तो revenue will be recorded of 50,000. It will be recorded in May. February में आपको 50,000 receive हो गए हैं. You are receiving it. It is an unearned income or income received in advance. What do you call it? Unearned income or income received in advance, which is a liability. This is a liability for the firm. है ना? आपको पहले ही पैसे मिल गए हैं पर आपने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया है. So you are liable to complete the work. Understood? So here you are going to record the revenue in May and not February. जब पैसे मिले हैं तब नहीं रिकॉर्ड करोगे. आप रिकॉर्ड कब करोगे? जब आपका काम कंप्लीट होगा, and that is in May. Understood the difference? Okay. Now what are the exceptions to revenue recognition concept? There are a few exceptions to this. First is your construction work. जैसे कि buildings, commercial property या residential property का जो construction work होता है, it takes many years to complete. है ना? Maybe 2 or 3 years I've written, but long, 10 years also sometimes. तो इसमें क्या होता है? इसमें जो installments आती है, इसमें ना कैसा, they have a plan कि 5th floor complete होगा, so then 5 करोड़ तक हमको रेवेन्यू मिल जाएगा. जब 6 रिमेनिंग 6 फ्लोर्स कंप्लीट होंगे तो 6 करोड़ का रेवेन्यू होगा. तो यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड द रेवेन्यू जैसे ही द मोमेंट द 5th फ्लोर तक का कंप्लीट हो जाता है कंस्ट्रक्शन, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस 5 करोड़ एज रेवेन्यू because the work is complete, because according to the plan it is like this कि 5 crore will be recorded after 5th floor तक का construction is completed, and after that remaining 6 floors अगर का construction अगर complete हो जाता है then 6 crore will be recognized as revenue, and you are not going to record the entire this revenue when the full building will be complete. No, because it will take years. Understood? तो आप उसको ब्रेक कर रहे हो, उसका कंस्ट्रक्शन या कंप्लीशन ऑफ वर्क को आप इन बैचेस में ब्रेक कर रहे हो. So we are not going to wait for the full building to complete and then recognize the revenue. We will break it into parts. So construction work एक ऐसा है जहां पर आप revenue recognition concept को ब्रेक करके यूज करते हो. And second exception is when goods are sold on hire purchase. Hire purchase मतलब इंस्टॉलमेंट में आप सेल करते हो कि आपको जो प्राइस है उस चीज का जो आप सेल कर रहे हो वो इंस्टॉलमेंट में आएगा. तो एवरी इंस्टॉलमेंट which comes to the business is recognized as revenue. So there are two exceptions to revenue recognition. One is your construction and one is your selling goods on hire purchase. Now the seventh important concept is the matching concept. Okay, matching मतलब दो चीजों को मैच करना. ठीक है, तो हम यहाँ पे किसको मैच करेंगे? वी आर गोइंग टू मैच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट इज expenses incurred in an accounting period should be matched with revenue earned through these expenses during the same period. So expenses must be matched with the revenue earned through these expenses during the same period. तो आप किसको मैच कर रहे हो? जो एक रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो, है ना, रेवेन्यू जो अर्न कर रहे हो, एंड एक्सपेंसेस विच यू आर इनकरिंग टू अर्न दीज रेवेन्यू. जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो खर्चा बिजनेस क्यों करता है? कोई भी खर्चा अगर बिजनेस करता है इट्स फॉर द प्रॉफिट, इट इज फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग सम रेवेन्यू. सो द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू and the revenue that is earned must both be matched. Both should be of the same period. They both should match and they should be of the same period. They should be of the
सेम पीरियड. ओके, अब हमने अभी इससे पहले क्या किया था, वी डिड की रेवेन्यू, व्हेन इज रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड, व्हेन इट इज अर्नड, है ना. अर्नड का मतलब क्या है, व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड, दैट इज व्हेन द बिजनेस फर्म delivers the goods and when it provides the services, and not when cash is received, and not when cash is received. So revenue is recorded when it is earned and expenses are recorded when they are incurred. This is very very important. Revenue is recorded when earned and expenses are recorded when actually incurred. मतलब जब आप actual खर्चा करते हो तो आपको क्या मैच करना है, you have to match the revenue, जो आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, एंड द एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न दिस रेवेन्यू, बोथ शुड बी ऑफ द सेम पीरियड. टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, उसी साल के होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डू दिस. अभी एग्जाम्पल के थ्रू आई एक्सप्लेन इट. द फर्म ब्रॉट लैपटॉप्स फॉर रुपीज 3 लाख इन मार्च. ठीक है, कब खरीदे लैपटॉप्स, मार्च में, एंड पेमेंट इज टू बी मेड इन मे. पेमेंट कब करनी है बिजनेस फर्म को, मई में करनी है, तो इट्स अ क्रेडिट परचेज इसका मतलब. एंड द सेम लैपटॉप्स जो बिजनेस ने खरीदे, दे सोल्ड द लैपटॉप्स फॉर रुपीज 5 लाख इन मार्च, अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन अप्रैल. अब वही लैपटॉप्स को बिजनेस ने सेल कर दिया है 5 लाख में मार्च में, पर क्रेडिट सेल करिए, तो जो अमाउंट उसको रिसीव होगा फर्म को, ये 5 लाख, दैट विल बी रिसीव्ड इन अप्रैल. अब लेट अस सी व्हेन दे आर रिकॉर्डेड. पहला तो है क्रेडिट परचेज करा लैपटॉप्स मार्च में, सो दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. दिस 3 लाख इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म बिकॉज लैपटॉप्स आर ब्रॉट. तो लैपटॉप्स का जो ये एक्सपेंस है, व्हेन विल यू रिकॉर्ड इट, व्हाट इज द कीवर्ड, expenses are recorded when incurred, so this is the keyword, expenses are recorded when they are incurred. Actually the laptops are purchased in March, तो March में आप इसको रिकॉर्ड कर लोगे, even though you have not made the payment is to be done in May. The business firm is going to pay in May, so you are not going to record in May, you are going to record it when the expense is actually incurred, that is in March. ठीक है. अब सेम लैपटॉप्स को आप क्या कर रहे हो, ये आपने खरीदे थे, at that time it was an expense. Now the same laptops you are going to sell for rupees 5 lakh. So 5 lakh is the revenue earned from this expense. See, correlate with the, ये जो हम पढ़ रहे हैं, हमने पहली डेफिनेशन करी थी, correlate with this, expenses incurred in an accounting period, ये हमने देख लिया. लैपटॉप्स जब परचेज करें, should be matched with the revenue earned through these expenses during the same period. तो आपने जो लैपटॉप्स खरीदे थे बिजनेस ने, कितने में, 5 लाख में, 3 लाख में, तो that 3 lakh is an expense, and the same laptops when they are sold at 5 lakh, this 5 lakh is the revenue earned from this expense. So when are you going to record the revenue? Revenue is recorded when earned. This is the keyword. Earned का मतलब क्या है, when it is actually sold. The laptops are actually sold in March. तो आप मार्च में इसको रिकॉर्ड कर लोगे, even though आपको वो जो अमाउंट है 5 लाख का, you are going to receive it in April. जिसने परचेज करा, द परचेजर सेड दैट ही इज गोइंग टू पे इन अप्रैल. सो कैश तो आपको रिसीव अप्रैल में होगा, सो यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इन अप्रैल, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस रेवेन्यू इन मार्च व्हेन द एक्चुअल सेल हैपेंड ऑफ द लैपटॉप्स, है ना, व्हेन द रेवेन्यू इज अर्न. सो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट विल बी, मार्च का अगर आप प्रॉफिट निकालते हो, प्रॉफिट इज ऑलवेज एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तभी प्रॉफिट होता है ना. तो रेवेन्यू कितना है मार्च का, 5 लाख है, बिकॉज मार्च में ही आपने रिकॉर्ड करा है, और एक्सपेंस कितना है 3 लाख, वो भी आपने मार्च में ही रिकॉर्ड करा था. सो दिस 2 लाख is your true profits. What does it show? Matching concept always shows true profits because you are actually recording the expense and you are recording the revenue earned from this expense in the same period. Both you are recording in March. कब रिकॉर्ड करा है, तो मार्च में करा है, तो प्रॉफिट भी मार्च का जो आ रहा है आपका 2 लाख, इट इज अ ट्रू प्रॉफिट, इट इज अ ट्रू प्रॉफिट. सो मैचिंग कॉन्सेप्ट शोज ट्रू profit of the business. So expenses incurred
whether paid or not, are recorded in the same period as revenue they help to generate, whether received or not. समझ में आ गया कि रेवेन्यू अगर एक पर्टिकुलर पीरियड का एक्सपेंस है, चाहे वो पे करा है या नहीं करा है, दैट इज इररेलेवेंट. आप द मोमेंट इट इज इंकर्ड यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट, एंड इन द सेम पीरियड, उसी मंथ में, उसी पीरियड में उस एक्सपेंस से जो रेवेन्यू हो रहा है जनरेट, वेदर वो रेवेन्यू यू आर रिसीविंग और नॉट, इट इज इमटेरियल. दैट रेवेन्यू यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड. तो एक्सपेंस भी आप उसी पीरियड का रिकॉर्ड करोगे, और रेवेन्यू जो इस एक्सपेंस से जनरेट हुआ है वो भी आप उसी सेम पीरियड में रिकॉर्ड करोगे. So then only it will show true profit and performance of the business, as expenses and revenue are matched in terms of same accounting period. है ना, दोनों मार्च के थे एग्जाम्पल में. So expenses and revenue are matched in terms of same accounting period. Understood? Now I'll give you one more example of matching concept. Now the business has purchased 10 mobiles at the rate of rupees 10,000 each. At the rate of rupees 10,000 each. तो total expense कितना हो गया? 1 lakh. 1 lakh is the total expense. ठीक है? Now these mobiles that they had purchased, out of these 10 mobiles, 8 mobiles are sold by the firm. They are sold by the firm for rupees 1,60,000. For rupees 1,60,000. So this 1,60,000 is the revenue. ठीक है, उसी मंथ में, जैसे कि इमेजिन करो कि अप्रैल में. ठीक है, now the what is the profit का कैलकुलेशन, what is the formula for profit is equal to revenue minus expense. है ना, होता है कि नहीं होता है? तो हम रेवेन्यू कितना 1,60,000 माइनस एक्सपेंस कितना 1 लाख, तो 60,000 is the profit. Is this the correct profit? Is this the correct profit? No, this is not the correct profit. This is the incorrect profit, because here you are purchasing 10 mobiles and here you are selling 8 mobiles. So your real profit should be, true profit should be relating to 8 mobiles only. तो आप रेवेन्यू जो आपका रेवेन्यू है, that is for 8 mobiles, है ना. How much? 1,60,000, है ना. अब जो एक्सपेंस है, that should always also be of 8 mobiles only. 8 mobiles का ही एक्सपेंस कैलकुलेट करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि 10 मोबाइल्स का. सो 8 मोबाइल्स कितने के होंगे? अगर 10,000 ईच है तो 80,000. सो योर प्रॉफिट इज 1,60,000 minus 80,000, which is 80,000. So this is the true profit. This is the true profit which is shown according to the matching concept. According to the matching concept. अगर आप matching concept नहीं use करोगे, then the profits that the business will show will be incorrect. Because if you are selling 8 mobiles, then the expense also that you will subtract from the revenue, it should be of 8 mobiles only, not of 10 mobiles. So here also matching concept is being applied to find out the true profits of the business. Understood? Now the 8th concept that we'll be doing is the full disclosure concept. Full disclosure means no secret to be kept by the business. Okay, so the business must disclose all the material facts and relevant facts to the users of the business accounting information. जो भी users है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जैसे कि क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, है ना, ये जितने भी है, गवर्नमेंट. सो द बिजनेस वो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दैट इज द बैलेंस शीट एंड द P&L, at the end of the financial year, it should disclose all the material and relevant facts to the users. कुछ भी secret नहीं रखना चाहिए business को. But do all the businesses follow it? No. It depends from business to business. ठीक है, ये full disclosure, it depends. ठीक है, business follow करना तो चाहिए, but do they do it? That's a big question.
So business must disclose every bit of information which reasonably affects the decision of the users like banks, investors, creditors, etc. ताकि ये लोग अपने रैशनल डिसीजंस ले सके. ठीक है, तो ये जो फुल डिस्क्लोजर होता है, फॉर दैट द फर्म और द बिजनेस मस्ट ऐड footnotes. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनाते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसके साथ दे शुड अटैच footnotes or notes to accounts which are detailed explanations and they give more information about the working of the business. बिजनेस के कोई भी important information जो है, what accounting practices they are following, is there any change in the principles that they are following, concepts they are following, तो वो सारी चीजें mention करनी चाहिए in the footnotes or notes to accounts attached with the financial statement so that the users are able to read it and then make rational decisions based on it. अब मैं बताती हूँ आपको through an example कि ये जो detailed, बार बार मैं बोल रही हूँ ना, detailed information और relevant information वो क्या है. Now, if there is a company which shows a profit of rupees 10 lakh in the books, कितना profit दिखा रही है books of account में? Company 10 lakh दिखा रही है. And if the company is undergoing a legal case, उनका कोई case भी चल रहा है court में, where if the company, if the business loses the case, then in that case the business has to pay 8 lakh as damages to the other business जिनके साथ उनका केस चल रहा है. समझ में आ रहा है? एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो ये केस हार जाए, वो ये केस हार जाए. तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्होंने प्रॉफिट 10 लाख तो दिखा रखे हैं, बट if the company is following the full disclosure concept, then the company will add a note along with the financial statement which will mention that the company is currently defending a lawsuit of 8 lakhs. ये इंफॉर्मेशन ये डिस्क्लोज करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि जो ये 10 लाख प्रॉफिट हो रहा है अभी हमारा केस भी चल रहा है 8 लाख का. सो मे बी इफ दे आर गोइंग टू लूज दैट 8 लाख, देन तो प्रॉफिट तो कम होंगे ही ना. So see, the company is disclosing it by adding a note in the financial statement. This is called full disclosure concept. Okay, one more example we'll see. Now, if the company changes its method of valuing stock, जो stock होता है, stock किस चीज का होता है? Inventory. Stock means inventory. It can be of raw materials, of semi-finished goods or finished goods. ठीक है? If the company changes its method of valuing stock, this makes the profit look 50,000 rupees higher. अगर कंपनी अपना स्टॉक का वैल्यूएशन मेथड चेंज करती है और उस वजह से जो उनके प्रॉफिट है वो 50,000 रुपीज हायर दिखते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन द कंपनी विल ऐड अ फुट नोट along with the financial statement that they changed the method of valuing the stock and how it affected the profit. वो ये डिस्क्लोज करेंगे कि हमने जो स्टॉक का वैल्यूएशन है उसका मेथड हमने चेंज करा है and this because of that the profit are looking 5,000 higher. This 5,000 higher profits is due to our change in the method of valuation of stock. So they are disclosing this relevant information to the users. और ये सब कोई पढ़ सकता है. Everyone, all the users who are having access to the financial statements of the business, they will be able to read this information. समझ में आया? Okay? तो ये जो फुट नोट्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट में कई बार क्या होता है, आप बैलेंस शीट में ऐसे लिखते हो फिक्स्ड असेट्स और उसके आगे आप लिख देते हो 1, नोट्स टू अकाउंट में 1, और फिक्स्ड असेट्स आपने क्या लिख दिए, हाउ मच, 5 लाख. ठीक है, अब ये फिक्स्ड असेट्स में बहुत सारे असेट्स आते हैं ना फिक्स्ड असेट्स के अंदर, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब कुछ आता है, फर्नीचर, फिक्सचर्स. तो यहाँ पे तो आपने टोटल लिख दिया है, but what is the breakdown? So breakdown of that fixed assets you are going to show in the notes to accounts. तो notes to accounts में आप 1 लिख दोगे और फिर उसके अंदर जो भी इसका segregation है you are going to write that कि plant and machinery it's for 1 lakh, building is for 2 lakh, furniture is for 2 lakh, and this makes a total of 5 lakh in the balance sheet. तो balance sheet जब आप देखोगे at one go you will just see कि fixed asset की value क्या दे रखी है, 5 lakh, but you won't be able to know यहाँ से, है ना. So disclosure breakdown you can see in the notes to accounts में. The breakdown of the fixed assets you can see in the notes to accounts. Understood? So in the full disclosure concept, whatever depreciation method you are using, that also you will write down in the footnote. Are you using
the straight line method of depreciation, are you using the written down method of depreciation, वो सब आपको उसमें लिखना पड़ेगा, आप क्या मेथड यूज कर रहे हो. Then in the notes to accounts or footnotes, you will also disclose all contingent liabilities. What do you mean by contingent liabilities? ये वो liabilities हैं which the company predicts ki maybe the company might have to face these uncertainties or these liabilities. ठीक है, they have not happened अभी तक, but they might happen, they might arise, these liabilities might arise. So the business will disclose all these contingent liabilities in the footnote or notes to accounts. Understood? Then the reasons for the low turnover, अगर company का low turnover है, then the reasons for the low turnover, they need to be disclosed in the footnotes. Understood? So this is the full disclosure concept. इसमें आप कुछ भी secret नहीं रखोगे. Whatever methods you are following, whatever changes you have made, whatever contingent liabilities that you feel that the business feels it might arise in the near future, that you can disclose. What are the reasons for low sales? Everything you have to disclose. ठीक है? And every business must make profit and loss and balance sheet, the financial statements, according to the format of Indian Companies Act 1956. ठीक है? इसका जो format होता है, that should be same for all the companies. All the business should make P&L and balance sheet in the same format, and this format is provided by the Indian Companies Act 1956. Then full disclosure को कौन रेगुलेट करता है, कौन देखता है कि कंपनी is providing all the necessary information? SEBI. Who is SEBI? Security Exchange Board of India. What is the full form of SEBI? Security Exchange Board of India will regulate the company to do full disclosure and give true and fair view of the profitability and how the business is performing. So this is the police who is going to see that the company is giving a true and fair view. ठीक है? So full disclosure concept का importance क्या है? What is the importance of full disclosure? The importance is it proves that the business is transparent. There is nothing that it's hiding from its users, and then there is a trust which is built in between the users and the business. There is a lot of trust built because of this. Then the business is honest. The business is honest and does not hide any bad news. ये नहीं कि हमारा तो low turnover हुआ, so let's hide it. No, they are going to disclose the reasons for the low turnover if they are following this concept. Understood? Third point is it warns the users of legal issues and debt problems that business is facing. कोई भी अगर legal issue है, कोई भी अगर case चल रहा है, and if the firm is having some debt problem, it's not able to repay its debts, that also the business is going to disclose if it is following the full disclosure concept. And this helps in risk management. Risk management because the users get to know of these issues and problems that the business is facing, and then they can take rational decisions based on the information that the business has shared with them. So all this helps users to make the correct assessment about the profitability and financial soundness of the company and make rational decisions. So these are the 4 points which state the importance of full disclosure concept. So next class we'll be doing the remaining 3 concepts and then 3 more assumptions that business follow, and with that we are going to wind up the chapter theory base of accounting, and then we'll do a few MCQs. Okay, so please don't miss out the upcoming videos based on theory base of accounting, because I'm going in a sequence as I've already told you, and you should also follow me in a sequence. Okay, so please do like, share, subscribe and comment to my YouTube channel Simply Commerce. Share it with your friends and learn along with me. Thank you so much.